ए यहाँ पे कौन सी ऊपर हो जाए Drilling machine using DC battery. Money part, I will give you the card, but one time you just sign off. They will come for the Mr. Tapas. Mr. Tapas, so he is our mentor. You can call him anytime. We will give Mr. Tapas. Okay. And I see melody starts buzzing. This is magnet. With the help of this we can create the repulsion and attraction and magnetic field, and also with the help of this we will show the eccentric then by changing the concentration, the and when you tilt it, the ball starts spinning. vision experiment. And it happens with this static electricity. Take me. Balls also. That is this, ma'am, you have to do like that. Just like this? Yeah. Okay. That's for the journal. Same thing is experienced by Vivekanand in Kanyakumari. 4 dimensions. So I would like you to experience one more. So if you don't mind, please lift your right leg from the knee like this. Feet should touch. Try to lift this. Now try to lift this leg. Center of gravity.
जल्दी ईश्वर भाई बेटा Ganga International Academy, Bhopal. Good morning, parents, teachers, principals, and our young friends. While many children across the country are slowly waking up to a lazy Sunday morning, in this room, we can feel the energy of several thousand watt bulbs lit by the collective brain power of the future Nobel laureates, future Einsteins, Aryabhats, Chandrasekhar Rao, and budding Steve Jobs. Citizens who will find innovative solutions to address the emerging challenges of not just India but the entire world. As most of you would know, over the last 2 months, ever since the Brain Cafe Budding Scientist Contest 2012 was announced, over 9,000 children from 300 schools across India have developed and demonstrated projects ranging from elevators to barometers and solar cars to cameras. The diversity and creativity has been phenomenal. Now, I would like to introduce our chief guest for the morning session, Mr. Santosh Mishra. Sir, your MSc Botanical Physics, MA LNM. Presently, sir, you are Secretary, Board of Secondary Education, Madhya Pradesh. In your previous assignments, you have been Classman Secretary, Additional Commissioner, Rajya Shiksha Kendra, Director, Indian System of Medicine, Director, Mahindra Bar Vikas, Additional Commissioner, Commercial Tax, Collector, Vetur and Barwani. Sir, it's a rare privilege and honor to have you with us. I request Mr. Bhuvneshwari Venkatraman, Chief Mentor, Z-Learn Brain Cafe, to present a token of reverence to our chief guest. I request Bhuvneshwari.
फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें सम्मिलित हो रहे हमारे सभी प्राचार्यगण, सभी टीचर्स, विशेष रूप से बच्चों द्वारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दूर इलाकों के आए हुए बच्चों के जो मॉडल्स और जो साइंस से संबंधित समझ के उन्होंने तैयार किए, क्योंकि खासतौर से आमंत्रित हमारे जजेस और सबसे पहले हमारे वो बच्चे जो दूर दूर से आए हैं, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजकगण, विदेशी और सभी उनकी पूरी टीम। क्योंकि मैं खुद विज्ञान विषय का, साइंस का ही विद्यार्थी रहा हूँ और 23 में MSc की है, इसलिए मैं और ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर सकता हूँ कि साइंस का हमारे रोज़ाना की जिंदगी में क्या है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे छोटे छोटे से बच्चों को विज्ञान विषय बहुत रुचिकर ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से उनका मनोरंजन करते हुए समझाने का प्रयास इस संस्था के माध्यम से हो रहा है। दरअसल साइंस कुछ नहीं है, जो हम आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, उनका लाभ उठाते हैं, उनका आनंद उठाते हैं, वो क्यों है, कैसे है, यह समझना है और आगे कैसे और अच्छे तरीके से कर सकें, उसके रास्ते खोजना। ये तीनों चीजें मिलकर साइंस को ना सिर्फ आगे बढ़ाती हैं, बल्कि और पूरी मानव सभ्यता को भी आगे बढ़ाने का योगदान देने में सहायक रही है। हमारे अस्तित्व के बाद से हम आज जो हैं वो सिर्फ इन्हीं कारणों से। मैं इस वक्त खासतौर से यह जिक्र करना चाहूँगा, सिर्फ विज्ञान विषय में से संबंधित, उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, जीव शास्त्र हो, दरअसल साइंस का मतलब जो है वो है साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक टेम्पर। हमारी प्रकृति मनुष्य की शुरू से साइंस के प्रति पॉजिटिव सकारात्मक अप्रोच के कारण ही ऐसी रही है कि हम आज सभ्यता के एक इस दौर में हैं जहाँ अन्य हमारे साथ के जो जीव मात्र हैं वो हमसे कुछ पीछे रहते हैं। तो ये साइंटिफिक अप्रोच ही है, वह साइंटिफिक टेम्पर ही है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस शब्द भी आया। गांधी जी ने कहा हम विज्ञान ढूंढते हैं, लेकिन उसको शास्त्र कहते हैं। समाज को भी जहाँ सिस्टमेटिक एक विश्लेषण करते हुए स्टडी होती है, इसलिए समाजशास्त्र भी उसी हिसाब से उसको रूप दिया गया है। जहाँ तक हमारे डे टू डे के काम और आगे की चीज़ें हैं जिनमें हम बच्चों को समझाना चाहते हैं कि हम किस तरह से हमारा विज्ञान हमारे रोजाना के कार्यों में सहायक है, हमारे रोजाना की जो हमारी दिनचर्या है उसमें उसका इस्तेमाल होता है। हमने लाभ उठाया, हमने कुछ कर लिया, पर वह चीज़ हुई कैसे, क्यों हुई? मुझे बहुत अच्छा लगा अभी छोटे छोटे से कुछ एक्सपेरिमेंट्स मुझे यहाँ आने के पहले बताए गए। जो मैम हैं उन्होंने बताया कि वो बच्चों को वो कुछ साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स की चीज़ें बता देती हैं और फिर उनसे कहती हैं कि डू इट, आप अपनी तरफ से
है, क्यों है, कैसे है। शायद यही साइंस की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देखो, अनुभव करो, सीखो और फिर कोई उसके पीछे पुख्ता धारणा बनाओ। हमारे सारे जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं साइंस के, उन्होंने बिजली की चमक देखी और उस चमक को देखकर ही उन्होंने कहा ये क्यों होगा। हमारे जो आज के साइंस के जो मुख्य कर्ता लोग हैं, उनमें से एक, उन्होंने सेब को टपकते हुए देखा, उन्होंने कहा ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, और फिर उन्होंने उसके पीछे पूरी कारण खोज के सामने रखे। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे दिमाग को इतना परिपक्व बनाती हैं, विकासशील बनाती हैं कि आगे की और बड़ी बड़ी चीजें हम खोज पाते हैं। यही सही उम्र है हमारे बच्चों की, जब उनको इन बातों की ओर ध्यान देना जरूरी होता है, सोचने समझने की क्षमता विकसित करनी होती है। मैं समझता हूँ हमारे इस संस्था के ऑर्गेनाइजर्स इस चीज को भलीभांति आगे बढ़ा रहे हैं और सारी पढ़ाई को बच्चों के बौद्धिक विकास से जोड़कर प्रयास कर रहे हैं। परिणाम भी दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश के दूरस्थ इलाकों से भी बच्चे अपने पालकों के साथ, अपने माता पिताओं के साथ यहाँ आए हैं। मैं उन्हें भी खास तौर से बधाई दूंगा कि वो अपने बच्चों के लिए इतने समर्पित हैं, उनके बौद्धिक विकास के लिए समर्पित हैं कि दूर दूर से यहाँ आकर बच्चों का उत्साह उन्होंने बढ़ाया है। आपने अपने बच्चे का उत्साह तो बढ़ाया है, साथ साथ बाकी जितने बच्चे आए हैं उनका भी और हमारा सबका भी, और हमने आश्वस्त किया है कि ये चीज़ जो आगे बढ़ाई गई है यह और आगे बढ़ती रहेगी और निरंतर इसमें हमको बहुत अच्छे परिणाम देखने मिलेंगे। मैं एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम को, इस मुहिम को चालू करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौके पर अपने साथ शामिल होने का मौका दिया। थैंक यू। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ Zealand Related Science, Mr. Kapil Soul, to speak a few words about GAIL. Achievement of Brain Cafe Science Zealand, Mrs. Bhuvneshwari Venkatraman, State Head Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan, Shri Rupesh Verma. Dear parents, directors, principals, and the budding scientists of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, it's my privilege to welcome you all to this gathering, the Budding Scientist Contest 2012, state level at Gyan Ganga International Academy, Bhopal. We are honored to have you present for this event. Talking about Brain Cafe Science. Brain Cafe Science is a joint venture of Zealand Limited and Gakken Educational Company, Japan. Gakken Educational Company brings with itself more than 60 years of experience in the field of science education, and it runs more than 2,000 science schools across Japan, benefiting almost 1 lakh students till now. Brain Cafe Science, in its endeavor to enable schools with innovative and interactive learning environment, offers a new world of learning that facilitates holistic development of child and offers experiential learning and constructivism. On implementation of this program, students are exposed to the Japanese way of learning science, and that evokes enthusiasm in students. The program is the missing link in the pedagogical aspect of science and fills the gap between teaching and learning science. It drives the student from rote learning to understanding the concepts of science through hands-on experiments. The program aims to develop higher order thinking skills among students through science by enabling the concept of learning by doing. This intends
to improve conceptual understanding and develop scientific temper among students. The pedagogy of the program is observe, explore, and reflect. Brain Cafe Budding Scientist Contest 2012 is an All India Science competition which was initiated last year and gave an opportunity to 3,000 students across 100 schools to come together and showcase their talent. This year, over 9,000 students across 300 schools have participated. The contest provides students with a unique platform to showcase their ability to translate concepts from book to exciting practical applications. Through this contest, we hope to nourish and nurture the interest of young minds towards science. Today, the 74 participants who are participating in the state level have contested with around 2,000 participants in the school level, and they have come to this level. Talking about the most important aspect of today's event, the elite and the distinguished panel of judges that we have with us. I'm honored to introduce each one of them. We have with us Mrs. Vandana Dhupad, Ms. Master in Science from Delhi University, MPhil Biosciences. She carries with her teaching experience of 20 years. Presently working as HOD Science and Delhi Public School, Bhopal, publishing practical science books for 9th and 10th for DPS students, and recipient of Best Teachers Award from Rotary Club are some of her achievements. Ms. Sri Rupa Kundu Mandal, postgraduate in zoology from Calcutta University and graduate from Andrews College, Kolkata. She has a vast and rich teaching experience. Presently working as science coordinator in Sanskar Valley School, Bhopal. Silver Medallion recipient for Best Science Teacher 2007, St. Xavier's College, Kolkata. Recipient of Certificate of Merit from Indian Science News Association for the 18th Annual Training Program on Science Communication and Media Practice. Judge for School Talent Research Competitions of Radio Mirchi. Presented and published papers at 6th National Teacher Science Congress, NTSC 2011 at Banaras Hindu University, titled Oneness of Purpose. Ms. Shubhangi Mewade, postgraduate and graduate in microbiology. She has more than 25 years of experience in teaching, currently working as PGD Science in Sagar Public School, Bhopal. Research work on Spiru ash, the dual fertilizer, in 2009-10. Founded Medicine on Beetle White Disease 2010-11. Presently working on producing electricity from gobar gas slurry. Recipient of Best Teacher Guide Award for MP by National Children's Science Congress 2010-11. Recipient of Best Teacher Award by Sagar Public School 2010-11. Teacher Guide for 2 consecutive years for the winners of State National Children's Science Congress and representatives from MP at Indian Science Congress. Mr. Hemant Patidar, Masters in Science and Masters in Public Administration, having a teaching experience of 10 years. Presently working as Senior Science Faculty in Delhi Public School, Bhopal. You are known for your unique teaching style. You are involved in personality development, and you are also a motivation guru. Ms. Asha Chaglani, Masters in Chemistry and working as Academic Coordinator in Methi Gopingram Public School, Bhopal. She has a vast experience in teaching and 3 times winner of Best Teacher Award and having skills essentials for holistic development of students. Mr. Girish M. Rajani, Masters in Chemistry and English, working as PGT Chemistry in Methi Gopingram Public School, Bhopal, having a vast experience in teaching, 3 times winner of Best Teacher Award, winner of Jyotirmay Award of Nai Duniya newspaper in 2009-10. The kind of judges, the panel of judges that we have, we are honored to have these kind of judges for this event. I welcome once again on behalf of Brain Cafe Science all the parents, teachers, students to this Budding Scientist Contest State Level Competition 2012, and I wish all the participants a good luck.
May God bless you all. Thank you. Students from different schools across Madhya Pradesh participating at today's contest are Category A, Priyanshi Tipriya, Rosemary Higher Secondary School, Harshvardhan Nagar, Bhopal, Arya Agarwal, Uday Public School, Sioni, Raghav Sharma, Mount Litra Z School, Bhopal, Bagisha Verma, Mahalakshmi Baiti, Ronak Patidar, Sri Sai Academy, Mau, Tanvi Bindal, Yogantar Public School, Rajnath, Prakhar Sen, Springdale Higher Secondary School, Jabalpur, Shivam Chabra, Florence International, Manasa, Adoni Chabra, Mount Litra Z School, Indore, Prashant Pandey, Bonify School, Bhopal, Vedika Chauhan, BD Toshniwal, Indore, Diksha Paliwal, Sai Shri International Academy, Ratlam, Nitesh Patidar, Krishna Academy, Dhargaon, Khushi Joshi, Education Park, Maneshwar, Category B, Jaishwar Chauhan, Sai Shri International Academy, Ratlam, Shipra Naveen, BD Toshniwal, Indore, Naresh Bose, Bonify School, Bhopal, Harshali Malik, Florence International, Manasa, Palak Nigar, Springdale Higher Secondary School, Jabalpur, Achal Singh, Yogantar Public School, Raghunandan, Vaibhav Agarwal, Sri Sai Academy, Mau, Vivek Mishra, Mayflower School, Bhopal, Pavan Patil, Mahalakshmi Baiti, Gatika Bohar, Bank Officer School, Bhopal, Sonit Singh, Mount Litra Z School, Bhopal, Kanishka, UK Convent, Nehru Nagar, Bhopal, Mani Sharma, Uday Public School, Simoni, Tanu Gorme, Rosemary Higher Secondary School, Harshvardhan Nagar, Bhopal, Chetan Patil, Bharati Vidya Mandir, Panchashil Nagar, Bhopal, Divyanshu Patidar, Krishna Academy, Dhargaon, Ritesh Girwal, RMDT School, Dhamlo, Om Lodi, Education Park, Maheshwar, Tina Patil, Bharati Vidya Mandir, Panchashil Nagar, Bhopal, Aman Soni, Rosemary Higher Secondary School, Harshvardhan Nagar, Bhopal, Category C, Divya Agarwal, Uday Public School, Sioni, Prakash Kashyap, UK Convent, Nehru Nagar, Bhopal, Aman Chaudhary, Rosemary Higher Secondary School, Kolhar, Bhopal, Aditi Verma, Mount Litra Z School, Bhopal, Prabhat Gupta, Bank Officer School, Bhopal, Arpita, Mahalakshmi Bai Tikri, Jagdish Rao, Mayflower School, Bhopal, Ankit Pawar, Sri Sai Academy, Mau, Dhruv, Yogantar Public School, Rajnandan Rao, Abhay Narayan Vishkarma, Springdale Higher Secondary School, Jabalpur, Yash Grover, Florence International, Manasa, Rakesh Serawat, Bonify School, Bhopal, Rohan Agarwal, Arpita Maheshwari School, Indore, Ayushi Chaudhary, BD Toshniwal, Indore, Vaishali Tikriya, Shri International Academy, Dhamnam, Raghav Patidar, Krishna Academy, Dhargaon, Maria Sekhji, Mount Litra Z School, Ratlam, Jain Jain, Mount Litra Z School, Ratlam, Ritik, RMDT, Dhamnod, Komal Rajdi, Education Park, Maneshwar, Vivek Patidar, Sai Shri International Academy, Ratlam, Janvi Naveen, R.K. Raga, Maheshwari School, Indore, Narud Hassan, Springdale Higher Secondary School, Jabalpur, Tushar Verma, Shri Academy, Mau, Idisha Gupta, Mayflower School, Bhopal, Snehalata Arya, Mahalakshmi Baiti 3, Shubham Mishra, Bank Officer School, Bhopal, Jasjeet Singh, Mount Litra Z School, Bhopal, Saurabh Yadav, UK Convent, Nehru Nagar, Bhopal, Krishna Agarwal, Uday Public School, Sioni, Abhishek Shetwalkar, Rosemary Higher Secondary School, Harshvardhan Nagar, Bhopal, Ashish Ariwa, Bharati Vidya Mandir, Panchashil Nagar, Bhopal, Raghunandan Patidar, Krishna Academy, Dhargaon, Vaishnavi Soni, Education Park, Maheshwar, Ritik Mahajan, RMDT School, Dhamnod, Sheetal Thakur, RMDT, Dhamnod, Devansh Pratap Singh, Yogantar Public School, Rajnandan Gaon. I would now like to felicitate very important people from
we are closely interacting with the children and have looked at the innovations? Yes, you are right, the judges. May I have Mr. Deepak Sharma, Area Manager, Brain Cafe Science, on the dais to felicitate Mrs. Vandana Dugar. आप तो ले लो। May I have Mr. Pankaj Shiva? Presentation, total 100 marks. All the calculators have equal weightage. Each of the 74 participants this morning is already available. Our judges have a tough task of picking the top 1 participant from each of the 4 categories who will be moving to the national level. For the next hour, while the judges meet the participant and understand his or her project and the idea behind it, we request parents and teachers to sit in this auditorium. Now, I request the judges to please start meeting the participants. We hope the energy in the room kindles the imagination and ignites the passion of the children across the nation. Thank you till we meet again. It comes up. Very good. Very nice. Very good. What's your name? Shivam. He was against the child has to use the waste material. Not the waste material bottle. वो फेविस्टिक आता है ना? Buy cover Very good. Very nice. Is also coming from Bansi. This is clean. Okay. Oh, very good, very good, very good. Affects a unhealthy environment on Animals. So we put in handy dead again. And he is healthy. If they eat this, they will die. You know? It's already covered. Because of this. Good, very nice. Name is Volcano. Volcano. Please let me know what type of project you have prepared. How it functions. How it works with that? Molten rock, material of the earth with the atmosphere is very hot. The point of eruption is known as epicenter. Oh. This heat lies in the form of magma. It comes from center of the सोलर सिस्टम क्या होता है बेटा? सूरज की किरणें से बह जाती है. Okay, very good.
और क्या करेंगे वो, कहाँ बिजली बनाएंगे और क्या करेंगे उसको? बिजली बनती है, ये है सोलर सिस्टम। ये बैटरी को क्यों लगाई यहाँ पे? ताकि बल्ब चले। तो चल रहा है आपका बल्ब? नहीं चल रहा। अभी सुबह है इसलिए क्या बनाया आपने ये? टाइप्स ऑफ सोलर हीटर। वेरी गुड। कैसे बनाया? आज कहाँ चले? हैंड शीट, न्यूज़पेपर, आइसक्रीम स्टिक्स, Explain the project. Can you explain your project? This is solar panel. Okay. And animals. Solar panel. Thank you, very good. Very nice. Global warming. Maheshwar said. Please tell me. Okay, just explain a little bit. Can you repeat it? Thank you. Okay, explain to sir. Please, global warming. हो गया बेटा? बता दीजिए. बताइए. सन है तो फिर क्या होता है? ये सब क्या है? ये कोऑर्डिनेटर क्या लगाया आपने? क्या है ये? तो ये इधर से क्या आ रहा है इधर? तो ये बर्फ पिघल रही है और पानी आ रहा है। बर्फ पिघल तो रही है। Can you please explain me? The meaning of balance is shrinking. Question is that when does it rain? When will the moon rain? When will it show rain? Through a flexible tube with the mouth of the after the full balloon and the show Waning. Waning will start after the full moon. But do you know why is this change in the phases of the moon taking place? Earth and sun do not have light off. Ma'am, they get the light from sun. Ma'am, when the moon is here behind, exact behind the earth, then the sun gets the light to earth and the moon does not get the light. So what stage is that? That is the new. Attached to a motor. Now we'll see the experiment. Proper the funnel of a manometer is the bucket of water which is now we not on the distance in the science keys have we not on the difference in water level of manometer careful. It's not down the base of funnel in different directions. The verifies that it's saying that Very in all directions. During the evaluation of Earth, the moon appears in different shapes. These shapes are called phases of the moon.
aerating them and then breaking them. Can you tell me what this process is called? Like no air is there inside, microorganisms are there, what is happening inside? Now I will tell you the different phases of the crystal wall. Crystal magnetic is slabs, butter and very magnetic. Now, for activity based on how to keep down here. This is my model. It's inside so that gas is produced. So here is the safe piece. Here is the static safe piece of this model. So from here you can see, the clear base and you can understand what gas it is. Well done, very good. I'm using a Gopal somewhere. Suppose we had like instead of one rectangle. क्या materials बनाए हैं ये? Whether you can answer them or doesn't matter. Just think about it. Whatever comes to you. Name for us. What is it? We can see the moon because it reflects the light on the sun. During visualization of Earth, the moon appears in different shapes. These shapes are called phases of zones. Now, you can see one cycle of phase is 89.5 years. Clearly a month. This time we take and the moon. So now I will tell you. Blood cells movement slowly because not Fine. Even it doesn't in my school also. Tell me, just outside my quarter. Give me a solution. In this project, I not make a big project, but I clean a project. When the water gets in engine level, then silent and then I know living in villages, people know that flood is coming and they go in safe places. So it's an alarm which you are telling us. Okay, so if you keep on pouring the water, level goes up automatically. No, we show it to the daddy. They will be coming. Okay, don't waste it. And drilling, when the water comes down, automatically it will leak. Very good. Well done. Okay. इससे में और एक मिल रहा है एक सेट भी घर से देखिए डिजाइन हाँ जस्ट ट्राई इट आउट वेरी गुड oh that's great tell me what does it happen So when it will rain, it affects the well. It is also used for water level in terms of meters. if it rains it will sense automatically so it can be kept in the outdoor very good So and if we have put some clothes or dried outside and we have gone inside for some work what's the condition and it will rain, we can put the clothes. so that's the practical application very good well done कागज काटो उसका ठीक है इधर मत देखो उसको देखो अब देखो प्रेस करेंगे तो सर जो एयर है ना तो सर एल्यूमिनियम रॉड में जाएगी और सर वो जो रॉड है ना सर वो एल्यूमिनियम रॉड तो वो जिगजैग फॉर्म में कन्वर्ट है तो और नीचे हाँ सर और फिर वो हाउस में कन्वर्ट है हाउस से कनेक्टेड है तो और नीचे जो सब सर अर्थ में जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है ना लाइक नमी तो जो एल्यूमिनियम रॉड है ना वो मॉइस्चर से जल्दी कूल हो जाती है और जो अपन पंप करेंगे ना तो जो एयर एल्यूमिनियम रॉड से जाएगी तो वो सब मॉइस्चर के कारण वो भी कूल हो जाएगी और फिर घर में सप्लाई हो जाएगी तो यस सर अब हाथ लगा के देखिए ना There is the exit for the air. एयर कहाँ से निकलता है वेरी गुड वेल डन सर लाइक जैसे अब घरों में एसी लगता है तो सर हजारों का बिल आता है तो सर इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे ना Okay. तो सर
सर बिल भी कम आएगा और Tell me. Just switch off. हाँ. 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 ठीक है. तो स्कूल में अगर हम लोग ये लगा देंगे तो आप स्विच देने से भी बल्ब नहीं जलेगा। जब भी का भी यूज कर सकते हो। स्विच का भी यूज कर सकते यस सर। तो जब भी अंधेरा हो जाएगा बारिश होगा उस टाइम में भी लाइट आएगा। वेरी गुड, ग्रेट प्लानिंग, वेल डन। आप ना हिंदी में बोलो। Stretching. Now, when bending is the time period when the moon reduces its size from full moon to new moon. Ma'am, the meaning of waxing is also called shrinking. How do we calculate? No. So we move on the axis when we rotate the room lifts the object. Electric corners or the computer or the faster the fusion, then the greater the current data developed produced by eddy current generator, heat and force the heat can be used for children, cars, truck, aeroplane and automobile viewers from building factory. Work final with this magnet. That is only aluminium. And that is magnetic. You can also do it, sir. As you can see that it consists of a U-shaped tube containing a liquid, and one end of a U-tube is open to the air. One end and the another end is attached to the thistle funnel is through a flexible tube. The mouth of the thistle funnel is covered with the मोटर में स्क्रू होती है और जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं It was like this. Nowadays the hydraulic system is done by the injection, but I use the CDO. It is generally called the lens. So I think that it will be different. You used on rotator here. Yes, sir. You used on motor there, it means the pan will rotate now. यहाँ आपने हल्दी लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड सब मिक्स कर दिया, तो उसमें क्या पैदा हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन में? Why is it happening so? Because the pressure in the balloon is high. So what is the message? What is on which principle this project is working? What is the principle of your project? So what is the name of your project?
What is the meaning of global warming? पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। कैसे बढ़ता है तापमान? लोगों को क्या बताना चाहिए? इससे हम लोग कर सकते हैं ऐसा। क्या कर सकते हैं? इससे हम लोग की ना हिम्मत है हम लोग ये कर देखिए क्या दिखाना है? हम लोग ये सब बनाएंगे। कैसे होता है? सर टूट पर प्रेशर करना है कि ये पता नहीं ये पानी में कुछ है? क्या है? आप अंदर क्यों पानी दे रहे हो? इससे लाइट चली ऐसा लगा नहीं। प्रोपेलर चल रहा है? पानी के अंदर चलने के लिए इसका कोई क्या प्रोपेलर या कुछ होगा? पानी के अंदर टायर चलते ना अंदर। अच्छा, टायर चलते हैं। मैम वाटर लेवल How it is going to pull it up? मैम इट इज लाइक मैम जैसे ये हुआ था मैम ये राइट साइड में मैम ये और नीचे मैम समझ जाएंगे कि पानी एकदम दूसरा है तो लाइन चलेगा। यस मैम। अच्छा, ड्राइवर में बैठेगा? ड्राइवर मैम अंदर फिटिंग मैम अंदर बैठेगा, कहीं लीकेज हो रहा है अंदर कार के अंदर तो मालूम चलेगा कि ये साइड कितने जन को ले सकते हैं इस कार में? कैन यू टेक योर होल फैमिली ये आदमी वाला का ये किसी देश में जाकर पानी के नीचे से जाकर दूसरे देश में घुसकर सबमरीन जैसे? यस मैम। दैट मींस एक बार लैंड में भी चलेगा, नीचे से जाकर व्हाट आर यू एमिंग इंडिया? इससे झटका नहीं लगेगा। फॉर्मूला क्या है? And the machine will remove the high pressure of this air and it makes hole in the sand, and with the high pressure of the air goes into the ground and all the waste material gets up. चार्ज रहेगी और बाइक में बैठे जाती रहेगी सर। इसके करंट नहीं है, आप पानी के अंदर रखिए खराब इसके अंदर सर खाली बैटरी तो ब्रेक में तो मैं क्या रिएक्शन होता है? हार्मोनल का रिएक्शन होता है। कन्वेयर बेल्ट नहीं करती है हाइड्रोलिक इस प्रेशर डाल के हाइड्रोलिक नीचे आता है वही ऊपर में आता है प्रेशर आता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है अगर मैं करना
आपके दिमाग से थोड़ा मेडिटेट अगर जिससे क्लास होता है जब हम इसको काटे तो इसको एक कैंडल भी connected in a series. Solar energy into electrical energy. इसके साथ स्ट्रिंजर को इन्वर्टेड जिससे कि जो जिससे कैंडल वो अंदर ऑक्सीजन चल सकता है जो हमको मार्केट में मिलती है उनमें क्या होता है अभी हम देखते हैं। ये एक मैग्नेट है सर, ये ग्लास ब्रिंजल और बैग्स वुड प्लास्टिक किसी को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन मैं स्टील को अट्रैक्ट कर रही हूँ। अब देखते हैं इसके अंदर आखिर होता क्या है। स्टील के अंदर फुल आयरन होता है, मैम आप टच करके फील कर सकते हैं। देखिए ना फुल आयरन क्योंकि आप ये आयरन होता है जिससे नेक्स्ट डे बेबी जॉन्डिस से सफर करते हैं और उस लेडी को भी स्टोन हो जाता है। इससे बहुत पहले बहुत कम लेडीज मीन्स स्टोन की प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे लेडीज। हेलो, आई एम सरबजीत सिंह चावला. My son Jasjeet Singh Chawla he is from Mount Lettoya Z School, Standard 8th. He is participating in Brain Cafe. It's very good. I mean, initiative. Yeah, it's a good initiative. Continue. It's a good initiative by Z Group. They are promoting kids towards science and बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से. मतलब बच्चों के आपस में इंटरेक्शन होते हैं, दूसरों के प्रोजेक्ट्स देखते हैं. तो वो चल रहा है, वो कट कर लेंगे. ओके, हम कट कर लेंगे. और अच्छा है, मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा इससे. दूसरों के प्रोजेक्ट्स देख के भी अपने प्रोजेक्ट्स के साथ कंपेयर करके उनको और नॉलेज भी मिलेगी. इसको थैंक यू.